Hello student, good morning. Today in this video I'm teaching you business studies for class 12th and I'll explain you the remaining principles of management in this video. As I already made two more videos of the same chapter on which I explained the starting principles of management such as like first division of work. Okay, I explained you about the history of Henry Fayol's, and then as I told you that he has given 14 principles. So division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest. All these six principles I already explained. And then I explained you the difference between unity of command and unity of direction also. Okay? Now today in this video I'll explain first our seventh principle which our Fayol has given, that is remuneration of employees. The overall pay and consumption should be fair to both employees and the organization. The wages should encourage the workers to work more better. So remuneration of employees में जो Fayol हैं वो insist करते हैं कि overall pay and consumption should be fair to both employees and organization. यहाँ पे जो एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर फर्म में वर्क कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर देम दैट दे मस्ट गेट द wages or the salary as per their work. The remuneration should be just and fair to everybody. तो जो remuneration है वो सभी के लिए fair और just होना चाहिए. Employee should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living. तो उनके लिए जो हम सैलरी उनको दे रहे हैं या वेजेस हम दे रहे हैं वो इतनी होनी चाहिए कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं दोनों के ही बेटर डिसाइड करने के बाद ही रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को फिक्स किया जाए. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का. इट विल इंश्योर that our atmosphere, in atmosphere we have to make a good relationship between the workers and the management. अगर हम अपना remuneration employees को सही देते हैं तो हम अपने employees के साथ अपने workers के साथ एक अच्छा atmosphere बना सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. इफ़ अ कंपनी हैज़ अर्न हायर प्रॉफिट देन इट मस्ट शेयर सम ऑफ इट्स पार्ट विद द एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ बोनस विच वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग टू देम. If we provide bonus to them, definitely they'll feel more better and they'll work more enthusiastically. Okay? इसके advantages क्या हो सकते हैं बेटा remuneration of employees के? If we provide high remuneration to our employees, they get motivation. Okay? And it is the way through which we can make good relation between employees and the management. And second, employees also work they are better towards the organization. Or if we not provide good remuneration to the employees, what are the consequences the firm follows? One is lack of motivation among the employees. Employees motivate नहीं हो पाएंगे, unhealthy relation बनेगा employees और management के बीच में, और जो हमारे labours हैं वो turnover करेंगे, means change कर देंगे firm को. ठीक है, so in 7th Fayol principle he has insist that we must have to provide a suitable remuneration to our employees which is fair and just. Okay, then in second principle which is 8th one, Fayol insists us about the centralization and decentralization. So according this principle there should be proper balance between centralization and decentralization in the organization. So centralization refers to constructing of decision making authority, where decentralization refer to evenly distribution of authority at all level of management. तो सेंट्रलाइजेशन में है कि जो पावर है वो कुछ ही पीपल के हाथ में होती है,
कुछ ही पीपल डिसीजन ले पाते हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ओवरऑल फ्यू ऑफ द मोर पीपल को पावर दी जाती है कि वो डिसीजन ले. देयर इज अ नीड बैलेंस subordinate involvement through decentralization and manager retain of final authority through centralization. तो यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि फर्म के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि मैनेजर सबॉर्डिनेट्स का हेल्प ले एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. ठीक है. द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स. ये फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. जो हमारा एक मैनेजर है उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट पर डिपेंड करता है कि सबॉर्डिनेट्स के ऊपर अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं काफ़ी सालों से तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज पॉलिसी अडॉप्ट करने में फ़ायदा है. ठीक है. साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी छोटी है तो हम सेंट्रलाइज तरीके से ही अथॉरिटी का यूज़ करें, और अगर फर्म बड़ी है तो उस कंडीशन में हम डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकते हैं. जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, एंड दोज आर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच वी यूज़ सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी. Too much centralization lead to delay in the work and complete decentralization lead to loss of control of top management. अगर बहुत ज़्यादा हम सेंट्रलाइज को फॉलो करते हैं तो इससे वर्क डिले हो सकते हैं. ठीक है. और अगर हम बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज का यूज़ करते हैं तो सिर्फ टॉप लेवल तक ही अथॉरिटी रह पाती है, और धीरे धीरे टॉप लेवल के पीपल मैनेजमेंट के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे कम होता रहता है. ठीक है. सो ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो क्विक डिसीजन लिया जाएगा अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को सूटेबली यूज़ करते हैं. ठीक है. वर्कलोड जो सुपीरियर्स हैं उनका कम होगा, डिक्रीजेस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स, एंड इंक्रीज इन द इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. और हम अपने सबॉर्डिनेट्स का मोटिवेशन उनको मोटिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ अगर वी टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायलेशन, अगर हम नहीं करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं करते हैं, सो स्लो डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड रिस्क ऑफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. तो दोनों का ही हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट principle, which one is in 9th, scalar chain. So Fayol insists in scalar chain that according to this principle organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinate. तो यहाँ पे scalar chain एक ऐसा तरीका है फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, through which we should have a chain of authority and communication. इसमें जो ऑथोराइज पर्सन है उसको अगर किसी बात को कम्युनिकेट करना है तो वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक पहुंचाने के लिए मैनेजर टू सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट करने के लिए स्कैलर चेन का यूज़ करते हैं. द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्कैलर चेन. तो आपको अपनी पिक्चर में भी दिख रहा होगा. इफ़ ए वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू एफ, फर्स्ट A would send the message to B, then B would send message to D, and then D inform to F. Okay, so this is the way of using this scalar chain. Now in your picture gangplank is also looking. तो gangplank अगर हम देखें, what is gangplank? Gangplank allows direct communication between two employees of the same level without following the scalar chain. For example, if F need to communicate to G, here he will use gangplank. Okay, it is the easy way to communicate. It must be noted that the concept of gangplank is possible only for employees of equal rank or some level or the same level we can say. Okay, तो यहाँ पे for example F और जो G हैं दोनों same level के हैं. देखिए टॉप लेवल में A, B, C आते हैं, then in middle level D and E, and then lower level F and G. So gangplank, it is one of the way through which same rank people, if want to communicate with each other,
they must be used this gangplank. Okay. Now next we talk about order. So order is also one of the important principle which Fayol has provided. So before this, let me explain you the consequence of scalar chain or the advantages. So scalar chain सबसे पहले smooth flow of information के लिए easy है. It is a clear line of authority and responsibilities relation. बेटर रिलेशन बनते हैं सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच में, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता. और अगर हम स्कैलर चेन का यूज़ नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन में नॉट बी फ्लो इन अ ऑर्डरली डायरेक्शन और देर आर मोर चांसेस इट शुड बी नॉट क्लियर टू द रिसीवर. अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर एंड लेक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है. सो in this video up to the scalar chain is enough. In next video I'll explain the 10th principles of management Fayol has given, that is order. Okay, so thank you and have a nice day.